folks. My name is Dhaval Aswin Dholakia, and you can call me Dhaval. I am a corporate agile practitioner. I work for IT, and I'm a corporate trainer as well. Uh, Today we have started. I gathered here to start our session on communication trainings. I would want to know what is the individual understanding that you all have on communication. आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपना mic, you can just unmute yourself and maybe tell me what you understand on communication, and we can take it forward. Anybody, we can start. I'll share the presentation on the screen in a moment. Sir, I want to share. Yeah, go ahead, please. Yeah, sir, communication is a thing which I can understand is a deliberation of information to the opposite partner, so that able to understand what I want to deliver my information properly. That is correct. That is correct. So, what do you want to deliver to next person? Information of things like. Correct, absolutely. So this boils down to, absolutely. This boils down to 2-3 things. One is there are more than one parties available in communication, Debashri. Second is we are sharing our thoughts. Third is we are sharing our thoughts properly. So these are the important things that we focus on. So when we share our thoughts to someone and we know that he or she has understood our thoughts properly, that's when we can say the communication has happened. Otherwise, there are many challenges or many noise related issues that we can say persist, and we cannot say the communication has happened successfully, right? Great, Debashi. That was super. Anyone else who would want to try here? Communication के बारे में हम क्या हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? What do we think communication is all about? Fayaz? Anyone else? Asim? Okay. So as I said, it's very important for us to have two parties in communication. What happens is there is a purpose for each and every communication that we, each and every session of communication that we do. We must know who are we dealing with. So primarily, there are two parties in communication, and communication happens to be, passing of thought from one person to another, rather than discussing things in a structured manner. We should let us first understand what is the purpose of communication to start with. So our purpose of communication might be informal, casual, official, business related, or maybe just for fun and entertainment that we are communicating with our friends. So in all that, all those scenarios, we must understand that there is a requirement of proper channel of, communication with people. So what are the various communication channels that we have? We can start with the basic one. Anybody, what are the various channels of communication? Yeah, go ahead. I cannot hear you.
Is that Shubh? Miss, one moment. Shahnawaz, is that Shahnawaz? I can see your hands being raised, but I cannot hear you. Maybe you would want to mute and unmute yourself again. Hello. Yeah, Mr. Sohail, yeah, go ahead. Okay, so you were asking regarding the channels for communication. Correct. So channels could be like non-verbal communication, like written communication, email and all. That is correct. That is absolutely correct. That is absolutely bingo. That's bang on target. So how did communication started? Because in society we had a need to share our thoughts. I would not go into the basics of it, but primarily we all understand that there were various channels of communication. It actually starts from verbal communication. It had all started from verbal initially. Later on, it moved on to written communication. So it's very important for us to understand that verbal and written, both communication channels are equally important, because we all are, gathered here to know about communication. We must focus on professional communication first, because we would all want to succeed in our professional life, in our careers, in our businesses, right? You can just stop me if at any given point of time you guys disagree to me. Okay, so in order for us to be successful professionally, we must be good at sharing our thoughts in a very positive manner. So it can be verbal communication and it can be written communication as well. Okay, now there are channels that we have spoken about, but there are certain tools that we use. So when we speak, we use our body, we talk to people, we use our mouth, we use language. We make sure that we have our body moving in such a manner that people are able to understand us better. There must be a proper coordination between that. Generally what happens is, people, in India and Southeast Asia, we don't use our body language enough and in proper manner so that people are able to understand us better. Plus our languages are such, we have a diverse background of languages. We have like hundreds and hundreds of languages that we speak. So in order for us to bridge the gap between the various languages that we speak from one person to another, we must use body language so that the other person can understand our words as well as our gestures. So that means gestures are also an important part of verbal communication. Then comes written communication. Written communication must have direct sentences, small sentences, less grammatical or no grammatical mistakes. We all are human beings, so there are mistakes that are bound to happen. But good communication can be termed that happened only when we are sure that there are, we can say almost no errors or grammatical errors that have happened in a particular discussion. Right? So let me go ahead and go to the first slide of our communication skills presentation. So this course that we are going to pursue for next, month and a half or so, every weekend we are going to be meeting here to discuss about communication. We'll have the, learning expectations being set today. What I'm going to be doing is we'll try to, complete this presentation the way it is being created. It's a wonderful presentation, as I can see. And we will try to make it an interactive session. Communication doesn't have to be in English. हम लोग आपस में आपको जो language comfortable होगी उसमें भी मैं चाहूंगा कि आप मुझसे बात करें, ताकि मैं आपको communication पे कोच कर सकूं. मैं यहाँ पे language पे कोच नहीं कर रहा हूँ किसी. ठीक है, तो प्लीज हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, जैसे कि मैं गुजराती हूँ, अगर कोई गुजराती में बात करना चाहे तो आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस दैट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस. माय इंटेंशंस आर क्लियर that we are able to, after the course is complete,
we are able to communicate better in our personal as well as professional lives, right? Guys, if you are able to hear me, can somebody just unmute and say yes, no, maybe? Because I'm just concerned about the connection. Yes, yes, sir, you are audible. Great, great. Thank you, folks. Thank you. Okay, so when once we have decided that learning communication is an integral part of our personal lives and our careers, and we are investing our weekends in that, make sure that we all participate. आपको कुछ भी doubt हो, आप उसी time just raise your hand and just tell me what your doubt is in any language that you think you guys are that you guys are comfortable. Okay, I'll try to decode it my way, and we are going to be sharing it with the group. So once our sessions are over, we have some material that is being created by the learned folks of this particular organization that you associated yourselves with. I'm going to be sharing that material with you with help of Ravi. Ravi, you are on call, right? Ravi is on call, but probably he's busy doing something else. So I'll be sharing that material. Yeah, yes, sir. I'm here. I know that. Yeah, so I'll be sharing that material with you, Ravi. I'll need your help in sharing that material with the team, with the individuals that are here on the call, and all of us will have 5 to 6 days to complete that assignment, and then we are going to join the call back again, discuss it openly, and we'll make sure that we have learned from that particular assignment, right? So as I said, that it's very important for us to understand the process of communication, which starts from one person, ends to another, which starts from one person, it may end to multiple people, and it might happen that communication might start from multiple people and it might end on one person as well. So there is no limit to it. So you just need to focus on the right way to communicate, and trust me, you'll be able to communicate with any number of people, right? Let me give you an example. हम stage shows वगैरह देखते हैं, ठीक है? उसपे there are many actors or many participants who are directly communicating on the stage, and they talk amongst themselves. हम स्टेज पे कोई भी शो देखते हैं, they are just participating in a communication amongst themselves, but there are hundreds of people who are sitting on the opposite side watching them. और जैसे उनका शो फिनिश होता है, they clap, they laugh hysterically, maybe अगर वो comedy show है. Why? Because they also felt being associated in that communication that those two folks were doing on the stage, right? It might be formal, it might be informal, but the point was the communication was so clear that the message that was supposed to be sent to the crowd was sent very clearly, right? So जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, that is a direct way of communication. In that way, we can say the other one that I just exemplified now is an indirect way of communication. So we all will have to be perfect, at least try to be perfect in in having direct as well as indirect communication all through our lives. ठीक है, हम घर पे भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, बट देन वी हैव क्लैशेस. हम ऑफिस में भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑफिशियल फैमिली के साथ या प्रोफेशनल फ्रेंड के साथ. समटाइम्स वी हैव रेग्रेसिव कम्युनिकेशन एंड एरर्स एंड क्लैशेस देयर एज वेल. सो इस पूरे कम्युनिकेशन सेशंस जो हम लेंगे 15 दिन 20 दिन, उसमें हम ये फोकस करेंगे कि कैसे उस नॉइस को, उस डिस्टर्बेंस को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड किया जा सके, so that we can achieve our targets through communication that we wanted to, and we move further in our professional and personal lives, right? So that is the that is the understanding of communication as a process. Next is, if you look at the screen, there is an importance of communication that we emphasize on. हम सबको पता है कि communication बहुत ज़्यादा important है, but फिर भी हम लोग सब उसमें struggle करते हैं. ऐसा क्या है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी नोशन है जो हमें पूरी लाइफ फेस करना पड़ता है. वी नो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट वी स्टिल आर फेलियर एट इट. एज अ ह्यूमन रेस, मोस्ट ऑफ अस एवरी डे वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स दैट वी थिंक यार मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, या मुझे ईमेल नहीं लिखना चाहिए था. इट हैपेंस विद अस, राइट?
Ever since we start our day, we face that. So it's so important for us that we need to make sure that if we do not communicate it right, we might lose our, personal relation with a person. We might lose a job. We might lose a business opportunity. We might lose our reputation. So if you look at the political scenario all across the world, if any political leader has to say something which doesn't make sense to people that he's facing, he'll be out of the game. So that is the importance of communication. If a doctor has to communicate with his or her patient, वो अगर ठीक से ये नहीं बता पाता कि आपके पेशेंट को क्या challenges हैं, तो पेशेंट ये नहीं समझ पाएगा कि क्या मैं ठीक होने वाला हूँ या मेरे साथ कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. So doctor at a very higher level of the society also needs to communicate right and focus in a focused manner to his patients. Teacher, अगर टीचर बच्चों को ये नहीं बोलेगी कि आपको क्या चीज कैसे करनी है, तो they will not be able to pass their exam and they might face challenges in life. Parents, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, it's a game lost altogether, right? If you are working in a company and there's a vice president who is taking your session and he is taking a meeting with you, if he wants to tell you the goals that he has for the organization in that particular year, he will have to be very sure of what he is talking about. अगर staff को कुछ भी questions हैं और staff comfortable नहीं है उनसे cross question करने में, maybe they are not communicating at the right level, right? Okay, that reminds me, what do you think is the best way to communicate within the family? Let's see, if you are it's a relaxed Saturday morning, you are at home with your family and you want to communicate about going to the shopping mall. As I see on the screen, I see 24, 25 participants. Anybody can raise hands and say, what will be the best mode of communication? Would it be, I mean, I would want you to guess. क्या best option हो सकता है आप अपनी family से कैसे communicate करें? I mean, you have to raise your hands before I come to you personally. You want to go to a shopping mall? You want to talk to your parents about it? What is the right way or the best way to communicate? Okay, I see a very unique, yeah, go ahead. Somebody has raised hand. Direct way of communication. Correct. बसीत बिल्कुल ठीक बोला, direct communication आपको करना पड़ेगा. Abdul, you also raised hand, right? You want to say something? Good morning, all of you. Good morning. Yes, the best way is to direct communication, but in some families there is a problem. So most of the children are comfortable with mostly with mother only. So first we'll approach to the member whom we are more comfortable. That is correct. According to me. That is correct. And then that member will pass your idea, your thought to other member. correct. Absolutely. Munir, you also have something to say. Munir, you were saying something? No, sir. No, sir. Okay. Yeah, that's correct. So we have touched very important aspect here, that we would directly speak to them in verbal communication. That's for one. Secondly, we will give them information through any other mode like written communication.
only when there is a problem in communicating, right? That's what you said. So that is a part of noise or the communication challenges that we generally face. So we all understand that whenever we need to communicate something, there is a possibility that due to disturbances, challenges, noise, and any other issue or problem, we might not be able to pass on the message the way we want to pass it on, right? So we are going to be talking about, the challenges which are a part of effective communication. So अगर मुझे just एक message भेजना है, so I'll be just standing up of the, just get into the room and talk to my parents directly about what I want on this particular Saturday morning. Can you guys hear me now? Yes, sir. Okay. Sorry, I was facing some, issue with my system, so I had to switch on to another room. Okay, yeah. And what should be the mode of communication if I have to speak to my senior at office, at work? Debashri, again, I'm coming to you. What should be the mode of communication if I have to speak to my vice president at office? Anyone else who wants to take a shot Yeah, at sir. it? Sorry, Yeah. sir, actually. Yeah, what is the question, sir? Can I? No? Yeah. Of course you can. Devashri, my question is, what should be the mode of communication if I have to speak or discuss anything with my vice president at work? So you should be very formal. Yeah, communication way should be very formal. Okay. And at the beginning, we should listen to our senior very nicely, and then we should understand the topic, and then we can respond to that. Absolutely. So the example that that was wonderful, Debashri. So the example that I gave initially, that when there's a vice president, talking to his team in an office, and people are not able to understand that person well, they'll not be able to deliver on the goals of that company for that year because they wouldn't understand anything properly. So as much it is the responsibility of the person who's communicating, it is the responsibility of the person on the receiving side of the message to be clear about what he or she is listening to. Like Devashri rightly said, if you have any questions, then you better ask, and there should be no room for doubt being left so that communication channel can be complete. So that brings us to another point of it, that the communication channel is a two-way communication channel. And the mode of communication becomes less important if your intentions and the way you are communicating is very clear. For example, if you know that there are right question that needs to be asked, if you know what person is saying, what he wants or she wants to accomplish with this particular communication cycle that they are processing, then there are less chances of errors, even if we are communicating orally or over email. So क्या होता है, ऑफिसेस में जनरली ये बोला जाता है, और हम इस चीज को फॉलो भी करते हैं. आप लोग भी अपनी जॉब्स करते हैं, अपने बिजनेसेस करते हैं, or maybe most of you, let's say if our students, you, every time that you want to communicate, you want to make sure that if the written communication is given to the person, it's given in a manner that is clear and he or she is able to ask either cross questions or is able to understand. क्यों? क्योंकि written communication का method बहुत ज्यादा क्लियर है, हम उस पे दोबारा से आके चेक कर सकते हैं मैसेज को. अगर मैं आपको ईमेल भेजता हूँ या एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजता हूँ, तब उसको 4 या 5 बार पढ़ के उसमें जो चीज आपको नजर आ रही है,
बनिस्पत कि उसमें छुपी हुई चीज जो है, उन दोनों चीजों को आप चेक करके मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो और मुझे रिप्लाई कर सकते हो। यस, नो, मे बी। ओके, आई कंसिडर इट एज यस। बट ओरल कम्युनिकेशन में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप यू वुड गो बैक एंड एनालाइज कि बोला क्या गया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक देवाश्री सेड एंड लाइक Abdul and Munir initially said, that we'll have to come back to the person and ask the question so that there should be no disturbance or noise that is bothering the communication, जिसकी वजह से communication पूरा damage हो जाए या hamper हो जाए। Then we have various options of perspectives of communication. When we put things to perspective, हम उसका एक parallel scenario draw करते हैं कि वो reality में क्या है। Okay, now directly go to this slide. I see Poco M2. Boss, आपका नाम नहीं आ रहा screen पे. I could only see Poco, so you will be on mute if you are not talking. Thank you. Thank you. Please mute your mic. Okay, great. Thank you. That was helpful. Okay, so perspective in communication. Can somebody tell me what is the perspective? आप स्क्रीन पे जो डिटेल्स आ रही हैं उसे पढ़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि पर्सपेक्टिव को लेके आप क्या समझते हैं। Perspective means the art of presenting something. Art of, sorry, I cannot hear you. Presenting means how we present. Perspective, okay, you're very close. How we present something comes later, but first we need to understand how we look at things. किसी चीज को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बाद ही तो हम उसे किसी दूसरे को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। What is our opinion about the things? Absolutely, Adil. Very close, very close. Anyone else who want to take a shot? Sir, I will try it in Urdu or Hindi. Wonderful, I would love that. सर पर्सपेक्टिव एक तरह का नजरिया होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नजरिया किसी चीज को लेके हमारा कैसे बनता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। Seeing the person at first. ठीक है, मतलब kind of first impression. बहुत खूब। और सेकेंडली ये कहूँगा कि उसके साथ टाइम लेते लेते हमें पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक है, पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है सवाल कि हमने किसी के साथ कितना वक्त गुजारा है, उससे हमारा उस इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। So that brings us to a particular point, that is trust factor that we have, right? Yes, sir. Perspective, yes, sir. Perspective is directly related to how we understand the universe as compared to what universe actually is. ठीक है ना? अगर मैं आप लोगों को देख के ये पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ अपने दिमाग में, या मैं एक assumption लेके चल रहा हूँ कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, you really want to study, मैं उतनी डिटेल में जाऊंगा आपको कुछ चीजें समझाने। या गो अहेड प्लीज, डज समवन हैव समथिंग टू से? कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, कोई और? सॉरी, शायद मैं अगर इंटरफेयर कर गया।
Okay, okay, आप चैट देख लीजिए जरा, किसी ने चैट मैसेज करा था. okay. Sorry, actually, आज पता नहीं क्यों Zoom is very slow. So it's very difficult for me to toggle. So देखा communication में यहाँ भी challenge आ रहा है because I am toggling between written and verbal communication. Thank you. I'll carry on. Okay. One moment. All right. So perspective. So इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है प्रेजेंटेशन में कि पर्सपेक्टिव आर द आइडियाज, व्यूज, आर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा दृष्टिकोण, मेरा नजरिया किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी समाज के प्रति कैसा है, वो मुझे बनाता है मेरे दिमाग में उस पर्सपेक्टिव को, और उस पर्सपेक्टिव को और उस प्रेजुडिस को लेके, उस पूर्वाग्रह को लेके मैं उस व्यक्ति या उस समाज के साथ अपना कम्युनिकेशन करूंगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू, let's take a vague example that I have to consider soldiers as a community. I would talk to them, or I in the morning I'm meeting a group of soldiers which I consider a community. I'll talk to them in bullet points because I think that probably they are very disciplined people and they have so many things to do and they would not be able to spend time with me. So अगर मुझे उनसे कहना है कि मैं आपसे शाम को इस वक्त पे मिलूंगा, मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सर मैं शाम को आपको इस वक्त यहाँ पे मिलूंगा, क्या आप इस मीटिंग से एग्री करते हैं? दे वुड से यस, नो, मे बी, एंड वी विल मीट और वी विल नॉट मीट. बट ये मेरा पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है कि वो सारे सोल्जर्स बहुत ही रिलैक्स मूड में हो उस दिन और वो चाहें कि यार तुम मुझे शाम को क्यों मिल रहे हो, तुम मुझे अभी मिलो, वी कैन हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर इन द क्लब. You see, I had a different perspective about them, which might be true at a certain level. But in that particular situation, while I was communicating with them at that level, I was not 100% true. So I'll have to, like I was given an example a few seconds back by Ms. Soil, that we need to know them. Let's see if the same group of soldiers that I know for last 10 years, and even for the fact that maybe I'm not in army at this point in time, I talk to them and say that what, आज शाम को मेरे घर आओ यार तुम लोग सारे, हम लोग अच्छा वक्त साथ बिताएंगे, और वो इतनी ही देर में वो अग्री कर जाते हैं. तो वो कम्युनिकेशन का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट मैसेज भी पहुंच गया वहां पे, एंड आई गॉट एन एग्रीमेंट एट द सेम टाइम विदाउट एनी नॉइस और कम्युनिकेशन डिफेक्ट्स. Why? Because my perspective was changed and their perspective was changed between us. There was no challenge with the perspective because we knew each other. The group knew me for last 10 years and there was no challenge with the perspective part of it. Right? Now, here the example is, तुमने दिमाग में सोचा हुआ है कि आपके टीचर या आपके फादर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अब वो चाहे कितना मर्जी फ्रेंडली हो जाए, जैसे कि मैंने सोल्जर्स का एग्जांपल दिया, वो कितना मर्जी फ्रेंडली हो जाए, हमें ये लगेगा कि यार अगर हम अपनी लिमिट क्रॉस कर गए ना तो वहां पे छड़ी उठा ली जाएगी और यहाँ पे बंदूक उठा ली जाएगी. So is the case with doctors. We have an impression of doctors of being very very strict, very very serious. हम उनसे कई बार खुल के सवाल भी नहीं पूछ पाते. कितने लोग इससे अग्री होते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बॉस हमारे सिर में दर्द होता है और वो हमारे सामने देखते भी नहीं है और वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिख देते, बिकॉज ही इज परसीविंग द फैक्ट कि मुझे पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उस चीज को मैं परसीव नहीं कर पाता अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे बताए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मुझे मेडिसिन दे. यू सी द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो इन हिज पर्सपेक्टिव he has understood the problem, but in order for him to close the communication channel, he must communicate it back to me that ये problem है और ये मैं आपको medicine prescribe कर रहा हूँ. right? So अगर मैं उसी डॉक्टर के पास रेगुलरली जाता हूँ, maybe he would know कि ये आदमी कैसे communicate करता है, इसके problems क्या हैं, इसके worst fears क्या हैं अपनी health को लेके. Right? So he'll probably want to communicate better with me. Yeah, I'm sorry. Yeah, Aleem has put in a message. First, we have to understand the situation, then exactly deliver the message. That is correct. That is correct. Yeah, anyone else wanted to say something? I'm sorry, I was just, I couldn't hear. There was a lot of commotion in the background. कोई कुछ कहना चाह रहा था?
बहुत सही चल गया। चलिए, अगर आपका नोट्स, मैं अंसार अली बोल रहा हूँ। हाँ अंसार, कहिए प्लीज। हेलो, या अंसार प्लीज कहिए। हेलो, गो आप अहेड सुन अंसार। पा रहे हैं? हाँ अंसार, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, मैं ये बोल रहा था कि जी, अगर आपका ये नोट्स हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। अंसार, मुझे खुशी होगी ये पीडीएफ फॉर्म आपसे शेयर करते हुए, प्रोवाइडेड कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रोप्राइटरी मटेरियल ना हो। मैं एक काम करता हूँ आपको, मैं इस जैसे जैसे हम कोर्स में आगे चलेंगे ना, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता रहूंगा, सो हाँ आप निश्चिंत रहिए। जी ठीक है, जी लेकिन अंसार अंसार हमारा फोकस इस बात पे रहना चाहिए। मैं आपको मटेरियल तो दे दूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मेरे आई हैव बीन वर्किंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 20 इयर्स नाउ। जितने भी आप मटेरियल्स देखेंगे ना, उन मटेरियल्स को स्टडी करने के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चांसेस बेटर होंगे आपके आगे सक्सेसफुल होने के। तो मैं ये मटेरियल्स तो आपसे शेयर करूंगा ही, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला ही था। बट मैं अंसार और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। यू टॉक टू मी सो दैट आई नो कि आपको बेसिकली क्या बेहतर चाहिए, ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, सो अंसार, you with me? ठीक है सर, ठीक। Okay. I share the हाँ हाँ, documentation later. ओके, थैंक यू। Sure, you will get it. हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ओके Sure. ओके, थैंक यू। ठीक है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। आप जरा एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, आप एक नौकरी ढूंढने जाते हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आप बहुत ही एफिशिएंट हैं, और मान लीजिए आप में से आधे लोग, मान लीजिए यूपी से, और आप जिसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इंडिविजुअल हो सकता है लेट्स अज्यूम नॉर्थ ईस्ट से हो या केरला से हो। आपको टेक्निकल चीजें तो बहुत अच्छी तरह से आती, बट आप उसको शायद उसी पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करेंगे जिस पर्सपेक्टिव से, जिस लैंग्वेज से आप अब तक सीखते आए हैं चीजों को। सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन मैनर भी हो, मैनरिज्म्स में हो सकता है एज समबडी फ्रॉम यूपी, आपको आदत हो हर चीज में बहुत ज्यादा तहजीब दिखाने की या शिष्टाचार दिखाने की या डिसिप्लिन दिखाने की। इफ देयर इज समबडी हु इज फ्रॉम केरला, चाहे वो कितना भी मैनर्स ओरिएंटेड इंडिविजुअल हो सकता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को डायरेक्ट बात करने में, और वो सीधा यस को यस बोलेगा, नो को नो बोलेगा। ठीक है ना, हो सकता है उससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या हम चीजों को ना समझ पाए, प्लस लैंग्वेज बैरियर तो आएगा ही। वो अपनी जो लैंग्वेज बोलेगा, चाहे हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस फ्रेम में नहीं बोल पाएगा जिस फ्रेम में आप बोल पाएंगे, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो इक्वली ट्रू। जैसे कि यहाँ पे चाइनीज और हिंदी का एग्जाम्पल दिया है। चाइनीज आदमी को सिर्फ मैंडरिन ही आती होगी, और हमें शायद हिंदी या उर्दू या हमारी जो भी जुबान है, भाषा है, वही आती हो। तो जाहिर सी बात है, डिस्कशन होगा नहीं, बातचीत होगी नहीं, और जितनी बातचीत कम होगी उतना एक दूसरे के बारे में नेगेटिव पर्सपेक्टिव बढ़ता जाएगा, और उसके बाद जब बातचीत होगी, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन चाहे रिटर्न और वर्बल क्लियर भी हो, लेकिन उसके पीछे का इंटेंट समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे आप फैमिली में देख लीजिए, चाहे ऑफिस में देख लीजिए, चाहे आप इंटरनेशनल सिनेरियो देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। मिसकम्युनिकेशन चाहे गलती से किया गया हो, चाहे डेलिबरेटली किया गया हो, उसको सिर्फ पर्सपेक्टिव के साथ प्ले किया जाता है। या सो यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव पार्ट ऑफ इट, कि ये लैंग्वेज है या विजुअल परसेप्शन है या कुछ भी ऐसा है जो मुझे गलत नजर आ रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, तो मैं उसकी डिटेल में जाऊं, आस्क क्वेश्चन, लुक एट द डेटा एंड देन रिप्लाई, सो दैट द कम्युनिकेशन बेटर्स, या कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए। विजुअल परसेप्शन, वेल, हम मूवीज देखते हैं तो हमें ये लगता है कि दिस पर्टिकुलर एक्ट्रेस और दिस पर्टिकुलर एक्टर, he or she looks very good on the screen, speaks wonderful language, हो सकता है that he or she must be a great man, just because we look at them that way. But ऐसा नहीं होता है, right? स्क्रीन पे उनको ऐसा दिखाया जाता है, we don't have to go into the details of it. यहाँ पे उसका ठीक ऑपोजिट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो भी उतना सही है। किसी ने अगर पुराने कपड़े पहने होंगे तो हम उन्हें गरीब समझ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी जी इस टाइप के कपड़े पहनते थे कि उन्हें कोई भी गरीब समझ लेता था, बट गांधी जी
बहुत बड़ी हस्ती थे, ठीक है ना। वही चीज हम किसी और के बारे में बोल सकते हैं जो सूट बूट पहनते हैं, रोज महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि वो उस पेडेस्टल पे उन्हें रखा जाए। यू सी व्हाट आई मीन? कोई क्वेश्चंस? ओके, पास्ट एक्सपीरियंस, जैसा कि हमें सोहेल ने बोला था कि हमारे किसी के साथ कितने डिटेल एक्सपीरियंसेस पहले हुए हैं। अगर किसी ने हमें एक बार चीट किया है तो हम उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और उसके साथ हमारे कम्युनिकेशन में चैलेंजेस बार बार आएंगे, बार बार हमारा उनसे झगड़ा होगा, तुमने हमारे साथ पहले ऐसा किया, अभी तुम गलती कर रहे हो। ये आइडियोलॉजी रहती है ना हमारी, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से बाहर आके ओपन कम्युनिकेशन से चलना पड़ता है, तभी हम उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, नहीं तो हम वहीं पे घूमते रह जाते हैं। प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, हमने पहले से ही सोच रखा है कि यार ये तो मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, तो जब तक मैं छड़ी उठाऊंगा नहीं ये सीखेगा नहीं। हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो अपनी जिंदगी से और आप उसे प्यार से बात करें तो एक बार में आपकी बात सुन ले, लेकिन वो आप पर्सपेक्टिव एक बना चुके हैं अपना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्लैशेस बढ़ने की संभावना रहती है। फील, व्हाट डू यू फील अबाउट अदर्स, व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ। लेट्स से इफ यू आर वेरी सैड ऑन दैट डे, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी इस तरीके से करें, राइट। हो सकता है आप उस दिन बहुत ज्यादा खुश हो, आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिला है या आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, या आप किसी खास आदमी से बात करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे और बहुत दिन बाद उन्होंने आपको कुछ अच्छे शब्द बोल दिए हैं, तो जिसकी वजह से आपका दिन अच्छा हो गया है। तो उसके बाद आप जो कम्युनिकेट करेंगे उस कम्युनिकेशन का लेवल डिफरेंट ही होता है, and that feeling has been added to the communication that you are giving to others, right? Environment, disturbance in the surroundings, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे काफी सारे disturbances आते हैं। I'm sorry, Ansar has a question. Sorry, मैं ना बीच बीच में चार्ट देख नहीं पा रहा हूँ, so I have to come back to it. So please don't mind if I'm not able to answer a question immediately. अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। Okay, I see that Ansar has a question. If opposite person does not want to listen to us, what to do in that situation? Every situation is different. इसमें कोई हमारे पास सिल्वर बुलेट नहीं है या पनेसिया नहीं है, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी दवा नहीं है जो हर गेम में चले। So आपको इस बात को फोकस करना होगा कि ऐसा क्यों है कि जो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है। हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव पे। हो सकता है शाहनवाज says then we can go the gesture way. Okay, but क्या वो ऑपोजिट पर्सन जो हमारी बात सुनना नहीं चाह रहा है, इन द सेंस कि क्या वो हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या किसी रीजन से वो बिजी है या हमारी बात उस तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमें जेस्चर इस्तेमाल करने हैं। तो शाहनवाज इज ऑल्सो राइट इन अ मैनर, सो वी नीड टू डिग डीपर, हमें थोड़ा गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि ये जो सामने वाला आदमी है वो हमारी बात सुनना चाह नहीं रहा, या उसने कान में हेडफोन लगा रखे हैं, या बिजी है, जिसकी वजह से हमें जेस्चर यूज करना पड़ेगा। So it's very important for us to get out of the perspective of what we are thinking versus we'll have to see what he or she is doing और हम उसके नजदीक कैसे जा सकते हैं कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जैसे कि आप लोगों ने, I hope and you can put in your messages in the chat. While I was sharing the presentation on the screen and I was not able to answer your questions that you're putting in the chat, I hope you didn't get offended, right? क्योंकि अगर आप offend हो जाते तो हो सकता है आप ये अज्यूम कर लेते या ये परसीव कर लेते कि यार मैंने चैट में क्वेश्चन लिखा है, इनको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, फिर भी इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे। आई एम फीलिंग वेरी बैड बिकॉज आई हैव पुट इन माय क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ 20 पीपल, बट आई होप यू डिडंट थिंक लाइक दैट बिकॉज यू डिडंट हैव अ परसेप्शन अबाउट मी दैट आई एम प्रॉब्ली इग्नोरिंग यू, बिकॉज आई एम नॉट, दैट्स अनदर थिंग। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन एंड हाउ आर यू ट्राइंग टू मैच अप द सिचुएशन। आप कैसे अपना पहला कदम आगे रखते हैं उस सिचुएशन को लेकर। स्कूल में क्या होता था हमारे साथ, आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट जो कि बहुत वोकल होता था। अगर क्लास में कोई भी सवाल पूछा जाता था तो अगर मुझे उसका जवाब आता होता तो मैं अपना हाथ खड़ा करता ही था, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब धीरे धीरे एक पर्सपेक्टिव बनने लग गया। अब दे यूज्ड टू, मैम, टीचर्स यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस, मैं उनको आंसर देता था। धीरे धीरे हो गया कि मैं जैसे ही मैं हाथ रेस करता टीचर्स मुझे इग्नोर कर देते, कि उन्हें पता था इसे आता ही होगा, आता ही होगा। कई बार ये होता था
कि जब मेरे बदले कोई और उस सवाल का जवाब देता था और वो सही होता था, मुझे रियलाइज होता था कि मैंने हाथ तो खड़ा किया था लेकिन ये सवाल गलत था, अगर मुझसे पूछा जाता तो मेरा सवाल गलत हो जाता। तो अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी टीचर मेरी बात नहीं सुनना चाह रही थी, बट दैट वाज ड्यू टू गुड फेथ दैट शी हैड इन मी कि ये तो सही ही होगा, पर्सपेक्टिव, यू सी। इसके अगेंस्ट अगर कोई सही जवाब देने की कोशिश करता है स्टूडेंट बहुत हिम्मत करके, लेकिन बार बार वो गलत जवाब देता था, और अगर टीचर उसको डिमीन करता है या डांट देता है कि यार तुम इतना भी नहीं जानते, तो वो गलत है, क्योंकि टीचर ने अब उसके बारे में परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये गलत ही बोलेगा। तो इसका मतलब टीचर उसकी बात नहीं सुनना चाहता, राइट। सो वहां पे ग्रेजुअली परसेप्शन चेंज होगा। उस स्टूडेंट को बार बार चांसेस लेने पड़ेंगे उस टीचर से बात करने के लिए, अपने सवालों को सही दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ग्रामेटिकल एरर्स कम होने चाहिए, मैनरिज्म ज्यादा होने चाहिए, उसका टोन बहुत कंट्रोल होना चाहिए सो दैट टीचर को ये ना लगे कि ऑफेंड कर रहा है। ग्रेजुअली परसेप्शन चेंज होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन का जो आउटकम है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अग्रीड? डू आई आंसर योर क्वेश्चन? अंसार, शाहनवाज? Okay. Then there are personal factors as well. What your habits? किसी की आदत होती है, you know, generally we have a habit of speaking very fast. India is a very diverse country. If you go to, Gujarat, people, I'm a Gujarati, so I want to talk about that. People are very happy when they talk to you. You know, if you meet them, you just gesture at them, say hi. They would want to talk to you. They would want to tell you how their day has gone and what are you doing in their city. How can you feel better? Which place you should go to eat. These are things they want to talk about. But their language is of course not the one that is matching yours. So हो सकता है कि वो आपसे अच्छी तरह communicate नहीं कर पाए. But because they have a habit of talking to people very loudly and जो भी उनके सामने आता है, they want to talk to them. Chances are bright कि अगर आपकी लैंग्वेज भी क्लियर नहीं हो तो भी 4-5 अटेम्प्ट के बाद आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। Versus if you go to another state wherein people are habitual of either not talking very far, not talking to new people, or their language is such that they would speak very fast and in their own language. If you, अगर आप देखें जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, केरल में मलयाली लैंग्वेज हो गई, या अगर आप तेलंगाना जाएं वहाँ पे तेलुगु हो गई या कोई और लैंग्वेज, कन्नड़, दे आर वेरी फास्ट इन देयर लैंग्वेज। अगर आप उनकी लैंग्वेज समझते भी हैं तो भी चांसेस हैं कि आप उनकी बात नहीं समझ पाए, और दे स्पीक वेरी लाउड, राइट। इफ यू गो टू बंगाल, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। तो वो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत स्लो है, बट ऐसा नहीं होगा, वो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम एट इज द feeling and habit and the way you think about situations is exactly the way you would behave and communicate, and that might impact the communication in a positive or a negative way, right? Culture, signs which have different meaning. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि जो अगर हम मगरिब की बात करें, वेस्ट की बात करें, वहां पे क्या है, इट्स अ गुड जॉब। बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ठेंगा। इस बारे में एक बहुत अच्छा जोक भी आया था कि जब 1 रुपए के कॉइन पे थंब का निशान आया था, गवर्नमेंट ने ये सोच के डाला था कि अगर हम इस पे थंब डालते हैं तो पीपल विल थिंक बेटर, बट व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि यार अब इस पे थंब इसलिए आता है क्योंकि अब आप 1 रुपए में कुछ भी नहीं खरीद सकते, तो ये ठेंगा है। So it's just a joke that people made out of it because they thought the different way than government used to think. ठीक है ना? So there is a different perspective about the thumb that is being shown there. It's a very small thing, but it can change the entire meaning of it. इस स्लाइड पे आपको कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरी स्लाइड पे मूव करूं। Any questions, guys? और अगर किसी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हैं या बोलना नहीं चाह रहे हैं तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन चैट में भी लिख के दे दें। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। It's a first class and we need to build a rapport so that we can go a long way.
I take a pause. I would want you to think over it, ask me any questions because this is very important. And this, yeah, go ahead. Anything you want to say or anybody wants to say? Indeed, language is perception, Uzma, you're right. We perceive, so language को हमने over the years, बहुत ही ज़्यादा, yeah, sure, आधे like and move. But language is perception. Language को हमने बहुत ज़्यादा importance दी है काफी सालों में. But the main importance should be given to the intent of how you behave and what you want to say. अगर आप लोगों को सबको पता होगा कि एक दूसरे का intention आप लोगों का एक दूसरे के लिए positive है, I'm sure you're going to have a very positive communication. It doesn't matter what topic you are communicating at and what level are you communicating at, right? So intent matters more than the language. Okay, I'm moving forward. Sir, I want to just share something Sure, go from ahead, my please. inside. Please do, Devashri, please do. Yeah, sir, as for my concern, actually, I know 12 languages, okay. So 2 foreign language and 10 Indian language. So, sir, as per my language concerned, okay, I want to say that language doesn't matter. Actually, the thing which matter is the heart which is matter and is our intention which matters a lot while speaking or communicating with someone. What you say, sir, according to that? Absolutely, that is what I'm trying to come at. And Seema, you're right. It's very important for us to have the right rapport with people. Why do you think there are some people who always succeed in communicating with others and they are always in good books of people? Because they speak to them with very positive intentions. They would not hide anything that they have in their heart and they would want to tell and give a direct message with the right intentions. So people gradually understand that if they have good perception and good intention about society, about people, about job, business, whatever they are doing, then there are less chances of them being harmful to the person that they're communicating with. So the person is relaxed and he would want to go to next level to communicate with that person. So I totally agree with what Seema has to say. Is that is Debashri? Sorry. Yeah, sir. It got tussled in. I'm sorry, it got mixed up. No, it's okay, sir. Yeah. So the visual tool that I'm relying on is the chat, of Zoom, and there's a latency here. थोड़ा late चल रहा है. तो इसकी वजह से क्या है? I'm not able to communicate the right way with you. अगर मैं सिर्फ 100% इसी chat पे rely करूँगा, so I think it's going to be an error because instead of taking someone else's name, I'll be taking someone else's. So that is also an error. Some more thing, like you said, Davira, people are, they are loud in nature and their communication way is, quite harsh. But it's not like that. Actually, they are very polite in nature. Even from, if you compare with our North Indian people, Davira's people are, even they are very polite and they are good in nature actually. Because I have lots of friends from Kerala and Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kannada. So they are very genuine and very nice people. So actually, they are very nice. Absolutely. They're wonderful people, but their language, actually, they love to talk with their language people. Okay. So that is the thing which people don't like in North India, that they used to, communicate within their own people, like their native place people or like their culture people, So that is the thing. Yeah. That is correct. So they are more inclined. Actually, sir. So people, like I said, India is a diverse country. So there is a possibility that whosoever you meet will have a different intention, towards you or towards someone else. Maybe he or she is a nice guy, but the way people behave comes from their culture and the way they are raised. So even if they are good people, they speak to you in a manner that probably you would think is offensive,
They never meant to be offensive, you know. And for Dravidian languages, since those languages are Sanskritized and they are very fast, it's very challenging for people who have not been raised in that environment, and they might take offense against it, even if that's not what they are intending to do. So you're right in that, and I totally agree to that. And it's not about the people, it's about the language that we are talking about. So people are good everywhere, but it's the language. And yeah, Abdul, you're right. It's same with the person from Haryana. He would have all the good intentions, but the way he speaks, you might think he's going to beat me up. So you're right, Alim. I totally agree to that. Ansar, you again had this question, how to communicate with the people who judge everything on money basis. So we would not go into the individual priorities in this session. We would go about improving ourselves. So if we are behaving the best possible way that we are doing, gradually we are going to be gaining grounds with everybody around us. So focus on improving yourself rather than looking at people who are thinking about money, car, you know, a job, business, or anything else. Our intention is to be the best communicator, be it in language, you know, verbal, written, or you know, be it the way we take our body language through. Yeah. And sometimes you have to ignore some people and learn through the experience, and don't make a perspective about it. So thinking that somebody is thinking on you know, money, so that is also a perspective in itself. Now, of course, Mike, you're from Haryana, so how should I enhance my communication skills? That's what we are studying here. So you don't have to think that you are from a particular state, that's why you will behave this way. No, you'll have to get out of that perception. That's what we are discussing in this slide, that perception is the killer of communication. You'll have to, so if it enhances your communication, it's only because you have a positive perception about things. That's equally negative if you have a negative perception about things. So make sure that whenever you communicate without perspective. किसी को ये सोच के कम्युनिकेट नहीं करना होगा आपको कि ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी, इस पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर जेंडर, इस पर्टिकुलर एजुकेशन बैकग्राउंड से है. आपको अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट न्यूट्रल पॉसिबल वे में ही करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इफ यू कम्युनिकेट विद अ चाइल्ड, आप थोड़े यू नो रिलैक्स्ड होकर उससे बात करते हैं ताकि बच्चा आपसे कम्युनिकेट करे. आप बच्चे के साथ उस वेवलेंथ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते जिस वेवलेंथ पे आप अपने फादर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मदर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? सो इट हैज नथिंग टू डू विद इट. Focus on the crowd or focus on the group of people that you want to communicate with. Change yourself according to that. Alim says, according to me, I try to talk to person after listening what kind of perception and language he or she is comfortable. Yeah, gradually. और ये आपको experience से सीखना पड़ेगा, Alim. You cannot just learn it a single day. अच्छा, किसी ने kindergarten cop movie देखी? We don't have much time, but I would just want to give a small example here. किसी ने kindergarten cop movie देखी है? Arnold Schwarzenegger. He was a teacher of kindergarten school. Okay, so वहाँ पे यही दिखाया गया है कि Arnold as a personality, he is a big man. He is a famous police officer, you know, and he's very strong and disciplined person. But when he was given responsibility to handle children, it was totally different ball game altogether. बच्चों ने उसको उसकी सारी skills को, उसकी सारी learnings को zero कर दिया और उसे बच्चों के level पे आके communicate करना पड़ा, तब वो बच्चों को govern कर पाया. Imagine a person who is handling a lot of criminals is not able to handle small children, toddlers. So that is what we need to learn. Correct, Nisar. Well, Nisar has a wonderful point to make. Actually क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, हम सब अपने अपने लेवल के prejudice लेके आते हैं, अपने अपने लेवल के perceptions लेके आते हैं. तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं बढ़िया बढ़िया jargons नहीं मारूंगा तो ये कैसे लगेगा कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ. ठीक है ना? जैसे कि मैंने गांधी जी का एग्जांपल दिया, और गांधी जी का एक एग्जांपल है, there are so many women communicators, there are so many men communicators who have never used jargons, and you will find them in every field. You know, they would talk to people as it should be. So you will have to ignore that part and you will have to focus on improving yourself, क्योंकि आप रोज ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको कई चीजें सिखाएंगे, आप उनके जैसे नहीं बन सकते. If people are throwing jargons at you just because they have known jargons, let's see,
I want to tell you this in a very frank manner कि kindergarten cop that is the movie. देखो क्या होता है कि jargons लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो खुद अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं होते. ये मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा. Whenever you talk to an engineer, if that person is not able to explain his engineering architecture to you in simple language, that means he doesn't know his job. ठीक है ना. अगर किसी टीचर को ABCD अच्छे से आती है लेकिन वो छोटे बच्चे को ABCD नहीं समझा पा रहा उसकी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, उसका ABCD से कोई लैंग्वेज यहाँ पे नाता नहीं. So that person needs to understand that if he or she is throwing jargons, that means he or she is living in his or her own world. वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है. अगर आपको निसार ये बात समझ आ गई है कि कोई आप पे jargons थ्रो कर रहा है, इसका मतलब कि आपको jargons थ्रो करने वाला नहीं बनना है. आपको jargons वहीं थ्रो करने हैं जहां पे उस jargons की जरूरत है. Otherwise, you cannot speak to your mother in the language that you speak to people in office. वहां पे आप jargons नहीं थ्रो करोगे ना. Otherwise, you would be a bad आपकी mother बोलेंगे यार इसको क्या हो गया आज. So you were not able to communicate well with your mother. So people who are using jargons, they are wrong. Jargon should only be used when those are supposed to be used. So I have one scenario, sir. Go ahead, please. Actually, when we first time go to any government bank, how will I communicate with the cashier to listen to me effectively? Is that Mohammed Talha? Yeah. Hi, Mohammed. Yeah. So Uzma, I'll come back to jargons. Give me one. Let me answer this gentleman first. So क्या होता है अगर if we go to a particular bank, office, or any other place wherein people are busy in their own world, you will have to give them an impression that you are very well behaved, and your body language should be such that they should not feel stressed and offended to speak to you. हमें चीजों की डिटेल में जाके ये पता लगाना पड़ता है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन कहीं पे ठीक नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है. जैसे आपने कैशियर का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हम बैंक्स में जाते हैं, वहां पे जो बैंक का स्टाफ होता है वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में 1 या 2 वर्ड्स का आपको आंसर देके अपने काम में लग जाना चाहता है. ऐसा इसलिए होता है उनके पास जितने भी लोग आते हैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं, और जो बैंक के कैशियर के बैंक के एम्प्लॉइज के पास जो उनकी हेल्प करने की पावर होती है बहुत लिमिटेड होती है. तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसके साथ थोड़ी ज्यादा बात कर ली तो किसी बात का गुस्सा मुझ पे उतार देगा. So if you are polite to them and if you understand their problem and empathize with their situation, say, sir, I know you are busy, can you give me 2 minutes please? Probably they would think that yes, since you are respecting their time, they would want to give you the answer. So you will need to break the ice by communicating it in a manner that the other person is felt comfortable. Right? Okay, jargons are actually, sorry, are you speaking? Yeah, no problem. Thank you. So jargons are actually the technical words that people use. जैसे कि अगर आप किसी बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर कहता है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इतने स्क्वायर फीट का है, मैं इतने दिन में डिलीवर कर दूंगा. हो सकता है किसी छोटे बच्चे को स्क्वायर फीट ना पता हो, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, या अगर आजकल जैसे बोले कि I was just talking to a builder that day and he said, you know what, I'm going to be giving you this project that is in my1 structure. I said, what is a my1 structure? I don't know. I don't have any structure. He said, my1 structure is RCC foam structure. I said, what is RCC foam structure? I don't know. फिर उसने मुझे पूरा समझाया कि इसमें जो columns होते हैं उसमें सीमेंट डाला जाता है and we don't use bricks and that is more stronger than some other construction. That is why it's called my1 construction. And then I understood and then we were communicating. अब उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मैं कस्टमर को एक वर्ड बोल देता हूँ, हो सकता है वो समझ जाए एंड मैं दूसरी बात करूँ, क्योंकि मेरे पास 10 बातें हैं करने के लिए जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट कस्टमर तो उस चीज को पहली बार नोट कर रहा है ना, तो उसको आपको कस्टमर के लेवल पे जाके ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर किंडरगार्टन के टॉडलर की तरह है जिसको आपको उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा. आपको टेक्निकलिटीज उसमें से हटानी पड़ेगी, है कि नहीं. हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें अलग अलग टेक्निकल चीजें हम करते हैं.
Okay, so that we, so that we understand the fact. 1 second, there is something. Okay, sir. Okay, I thought there was a question there. So jargon is anything that is technical which is not being understood by the other person. जैसे कि अगर हम गाड़ी की बात करें, हम सबको कार्स का और बाइक्स का बहुत शौक है, लेकिन अगर किसी लेमैन से बात करेंगे और हम बोलेंगे यार मेरी मोटरसाइकिल में इतने BHP हैं, या मेरी कार का थ्रॉटल रेशियो ये है, या मेरी बाइक का पावर टू वेट रेशियो ये है, तो आदमी सोचेगा यार ये आदमी क्या, इज ही आउट ऑफ हिज माइंड, व्हाट इज ही टॉकिंग टू मी, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, मेरे लिए तो सिर्फ एक कार है जिसमें 4 पहिए हैं, जिसमें ये बाइक है जिसमें 2 पहिए हैं, तो मुझे समझाना पड़ेगा पावर टू वेट रेशियो क्या है, थ्रॉटल रेशियो क्या है, थ्रॉटल पोजीशनिंग क्या है, ये सारी जार्गन्स हुई, क्योंकि मैं उस टेक्निकल चीज को समझता हूँ अपनी हॉबी के तरह, बट कोई और नहीं समझेगा। कम्युनिकेशन का बता रहे हैं 10 बजे से शुरू होता 12 तक खत्म हो जाएगा, चल रहा है, अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने पूरी दिन तो अभी ज्वाइन करा। Okay, Ravi, are you there? Yeah, hello. Ravi, Yeah. how much time do we have? 15 minutes. 15 minutes, okay. Yeah. So I'll it's going to be very difficult to complete this particular slide, but I would want to tell you that effective communication helps if we follow this basic principle. This is a wonderful slide that has been created. Yeah, go ahead. Do we have any questions? So, hello. Yeah. If you are not talking, then you need to go on mute. Yushra, can you please mute your mic? Okay, no problem. Okay, so in next 15 minutes, we would say these are the pointers that we should be focusing on in effective communication. मैं उसमें एक बात आपका आंसर करना जो हमने बैंक के कैशियर का एग्जांपल लिया था, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है जो यहाँ पे सबसे लास्ट में मेंशन किया गया। ऑफ कोर्स ये उन पॉइंटर्स की इंपॉर्टेंट के सेंस में प्लान नहीं किया गया है, दिस इज रैंडमली गिवन, बट for any communication that you do with people, you must be courteous. If people know that you're talking to, चाहे आप उनसे पहली बार भी communicate कर रहे हो, they would get to know in few seconds if you are respectful and honest and friendly or not. Language बाद में आती है, आपका social status, आपने जैसे कपड़े पहने हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो बाद में आती है। अगर आप respectful हैं, then I think it's going to solve a lot of problems for you. चाहे कैशियर की प्रॉब्लम है या कुछ और। I would want to give you another example जहाँ पे हम बिना, अच्छा कोई और मुझे एग्जांपल दे सकता है, सिर्फ 10 seconds में भी कई बार क्लैशेस हो जाते हैं, हम लैंग्वेज यूज नहीं करते फिर भी। किसी के पास एग्जांपल है? इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल, हम रोज उस चैलेंज में से गुजरते हैं। I would give 30 seconds to people to give me an example on that. Can you come up with the question again? Yeah, the question is, in daily life, we face a challenge wherein within 10 to 20 seconds, even if we look at someone, there is a situation when we get into a fight, and it's not communication that is we want, right? ऐसा हमारे साथ होता है, रोज होता है. So can you tell me any such example? Because I have one example. अच्छा, यहाँ पे language use नहीं करते हैं. We are just looking at the gestures जिसकी वजह से problem हो रही है. Traffic jam. Wonderful. I was expecting bang on. So whenever you are in traffic jam and we are passing the traffic jam, neighboring road car, rage and other. Yeah, absolutely, bang on. क्या करते हैं हम? बात नहीं करते किसी से. पास से में कोई जा रहा है, किसी ने rudely थोड़ा हमने overtake किया, जैसे ही eye to eye contact हुआ, and that was the start of it. Because neither of us was courteous, respectful towards the other person's problem. और हमें लग रहा था यार हमें ही जाना है, या उसे लग रहा था उसे ही जाना है, उसी का ही रोड है. And then all nonsensical things blow up and the situation goes out of hands. So वो क्या था?
वो कम्युनिकेशन ही तो था. We deliberately, with wrong perspective, but intentionally we did wrong communication and we were not courteous. So of course it was supposed to happen, right? Wonderful example, guys. So these are the things. So we have to be clear in what we want to say or write. घुमा घुमा के नहीं लिखना. आजकल लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. Ever since the advent of social media, I have seen लोग लिखते हैं जब ऑफिस के ईमेल्स पे या व्हाट्सएप के मैसेजेस पे, वो ऐसे लिखते हैं जैसे कि मे बी वो शायरी लिख रहे हो. ऐसा नहीं होता गाइस. वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, राइट? हर कोई आदमी शायर नहीं होता. कुछ लोग बहुत गलत तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती. व्हाई नॉट टू स्टिक टू पॉइंट? क्योंकि अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो लोगों को नहीं समझ आएगी. कुछ लोग ईमेल्स लिखते हैं, उनके दिमाग में जो आता चला गया वो लिखते चले गए. दे कीप ऑन राइटिंग. अरे भाई, आपने एक सेंटेंस में अपना थॉट लिखा, उसके बाद पंक्चुएशन मार्क कॉमा डालिए, पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप डालिए, पैराग्राफ में अपनी बात को डिवाइड कीजिए, so that people are able to understand what are you actually trying to say, what point are you trying to make, because if you don't do it then it might be problem. आपने एक छोटा सा एग्जांपल सुना होगा जो हम हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ 3 वर्ड्स का एग्जांपल है, छोड़ो मत जाने दो. अगर इसमें कॉमा गलत जगह लग गया तो क्या आ जाएगा? छोड़ो कॉमा मत जाने दो, और छोड़ो मत कॉमा जाने दो. चेंज हो गया ना पूरा. So we need to make sure that we are very clear in what we are writing. Otherwise, it can, blow out of proportion. It can go somewhere else. Concise, like I said, simple words. Say only what is needed. आपको मैनरिज्म में डियर सर, डियर मैम, थैंक यू, प्लीज, मैनरिज्म्स यूज करना है, बट नॉट दैट यू राइट द एंटायर स्टोरी अबाउट देम एंड देन यू राइट योर मैसेज. उसे नहीं समझ आ पाएगा. सीधा बोलो आपको क्या चाहिए, राइट? कंक्रीट, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ फ्रेजेस, यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, आपको एग्जांपल देने के लिए जो फैक्ट्स हैं वो यूज करने चाहिए ताकि उन फैक्ट्स का रेफरेंस वो ले सके. जैसे कि लेडीज बहुत अच्छा करती है. अगर हम कुछ बार्गेन करते हैं तो हम आई एम एक्चुअली नॉट जेंडर बायस्ड, बट आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग लेडीज ऑन दैट. ट्रस्ट मी, आई वुड वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड्स एंड टॉक अबाउट इट. इफ आई हैव टू नेगोशिएट विद समवन एंड आई वुड से, यार तुमने ये बहुत ज्यादा पैसे लगाए यार, इसको थोड़ा कम करो. दैट्स नॉट राइट कम्युनिकेशन. वो कम का क्या मतलब समझेगा? कुछ भी करेगा या वो नहीं करेगा. बट इफ somebody is a good negotiator, they would say, ये तुम 100 रुपए का बोल रहे हो, मैं 50 रुपए ज्यादा नहीं देने वाली. सिंपल, बुलेट पॉइंट, टेक इट और लीव इट. क्लियर कम्युनिकेशन, नो रूम ऑफ एरर. पर्सन मुझसे, नहीं बॉस मैं 75 में दे सकता हूँ. वंडरफुल, डील क्रैक्ड, राइट? सो वी नीड टू बी वेरी exact and put the right numbers and right figures of what we want. And please feel free to correct me whenever you think I'm wrong, right? Please tell me about it. Spelling, grammatical mistake should not happen. Grammatical mistakes can be dangerous. Coherent, everything should be in relation to it. For example, अगर हम एक particular meeting कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो meeting जिस topic को लेके की गई है, अगर उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं, then that's not right communication. क्या होता है, there are certain government meetings, उसमें क्या होता है कि आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि इस फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो है वो डिले क्यों हो रहा है. Then the secretary would say, okay, flyover project is delayed because of the budgeting problem. But the officer would say, अरे यार बजट की बात छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ मीटिंग में जो लोग आए हैं उनके लिए हम स्नैक्स क्या ऑर्डर करेंगे. Is it the right way to communicate? No, it's not coherent to the meeting. They are talking about something else more importantly than the topic itself. है कि नहीं? And then your message should be complete. आधी बात बोल के छोड़ देना, that's not right. सामने वाले को समझ नहीं आएगा. ठीक है ना? We'll have to tell them what you want. अब आप बोलोगे यार मुझे ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके फादर को आपको बोलना पड़ेगा कि आपको ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप मेट्रो का पास बनवाना चाहते हैं, स्कूटी लेना चाहते हैं, या गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, या आप अपने फादर को बोलेंगे नहीं, तब तक वो आपके लिए वो अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे. You see what I'm trying to say? So it was just an example, right? So these were the things that we studied today. I would want you to ponder, thoda focus on what we have studied today. I would go through the slide again, and then in the next five minutes you can ask me your questions, and then we can terminate the class for today.
Ansar, I'll send the materials. Yes, I'll talk to Ravi and I'll share the materials as and when I possibly can. It's going to be given to everyone. Any questions, guys? You can talk to me, you can chat. We still have 5-7 minutes to go. Dhaval, are you on mute? Yeah, I'm in mute. Yeah, tell me. Now Okay, I thought you were saying something. no, actually, I was saying that we can coordinate with Ravi later and share the documents with the batch. Okay, do we know what semiotic conventions are? आजकल बहुत common हो गया है. Semiotic conventions are when we communicate using sign language. Sign in the sense, इशारों वाली gesture वाली भाषा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. WhatsApp पे जो emojis भेजते हैं, Facebook पे जो हम stickers भेजते हैं, या जो ऑफिस में प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए डायग्राम या नोटेशन लिखने के बदले एक फोटोग्राफ चिपका देते हैं दैट सेज इट ऑल. ठीक है. सो व्हेन यू से द कस्टमर इज एंग्री, सो वी स्टिक अ फोटो ऑफ अ चाइल्ड दैट इज एंग्री. दैट फोटो लुक्स क्यूट, आवर मैसेज इज सेंट, दैट कस्टमर इज एंग्री. Just giving an example. So these are the communication options which are known as semiotic conventions. हमें आजकल बहुत हॉबी हो गई है ना, हम WhatsApp पे चैट करते हैं, अगर हमें जवाब नहीं देना हो तो कोई भी एक इमोजी सा भेज देते हैं कि सामने वाले को लगे कि हमने रिस्पॉन्ड तो किया, but that's not clear communication. You can add semiotic conventions, but you cannot rely on semiotic communication whole and solely, क्योंकि वो सामने वाला उसे अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जज करेगा. Okay? Questions? Hey Manish Pal, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ. Okay, what do you don't understand? Can you tell me? Are you able to hear me, Manish? Okay, can you please speak? आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? I'll be happy to explain again. अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आया सर. तो आपने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? क्लास खत्म होने के टाइम में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सर लेट ज्वाइन की है, मैंने भी किया 5 मिनट पहले ही. Very good. देखा, so clear communication. I had a question कि काम क्यों नहीं हो पा रहा, मैंने क्वेश्चन पूछा और मनीष ने राइट आंसर दे दिया कि भाई उसने ज्वाइन ही नहीं किया तो समझ कहां से आएगा. बट या मनीष, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन. कम्युनिकेशन में बेसिकली वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर क्लियरली कम्युनिकेटिंग and there should be no perspective around things, and there are many methods of communication. I'll share the presentation later. आप उसमें से देख के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके सर. श्योर. वैसे सेमियोटिक का मैंने एग्जांपल ये किया है, जैसे व्हाट्सएप के इमोजीज होते हैं ना, सो दैट्स इट. Thank you, Shan. Anyone else with any question? Guys, मेरा intention ये है. Okay, निसार sir, how important is English language in communication? देखिए, हम कितना भी कोशिश करें, अल्टीमेटली सारे सवाल घूम के इसी बात पे आ जाते हैं कि इस दुनिया में अंग्रेजी जुबान किसे कितनी अच्छी आती है. That is a challenge that we all face. Prior to starting my career in international BPOs and banking, I also used to think the same way. But later on, I realized that language is important only in a particular situation where that language is required. It's a part of communication. It is not the communication whole and soul itself. You should be aware of subject matter as well. आपको किस बारे में बात करनी है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको. और आपकी कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको प्रेजेंटेशन किस बारे में देनी है, आप समझाना क्या चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश बेकार है. आपने चाहे
ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले रखी हो लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसका कोई और कारण ढूंढना पड़ेगा. There must be some other reason why you're not able to communicate well with your parents. Maybe you're not courteous. Maybe you are not actively listening to them. Maybe you are not as slow as they want you to be so that they also can understand you better. Maybe you are not giving them the time they need. Maybe you are not courteous enough. Or maybe you know everything and you would just not want to do what they want you to do because of your perception about them. Communication kahan hua? Nahi ho paya. So English or any other language is important because it's a part of communication. It is not the communication itself. For English, I can take separate sessions, but in this session, I'll be talking about English as a part of it. English में बहुत सारे aspects होते हैं जो कि हम सीख कर अपने communication को improve कर सकते हैं. You will need to speak English to people who are natively English, who speak native English language. You need to speak English to people who are not English, but they are Indians. You need to speak to English to people who are from Europe, जो कि English नहीं है. You know what I mean? Japanese and Chinese. With everybody, we'll have a different approach. उसमें language backseat पे चली जाती है. आपकी courtesy, mannerism, understanding, listening skills, ये सारे probing, paraphrasing, ये सारे front seat पे आ जाते हैं. So हम सारी चीजें धीरे-धीरे सीखेंगे तो हम overall successful individual हो पाएंगे. नहीं तो it's very difficult. तो English का importance वही है जहाँ पे हमें English को use करना है. It's a part of it. Baki, I'll coach you, coach everyone on English as well. As we go further in the session, बहुत सारे ऐसे aspects आएंगे. ये study material जो है काफी detail है जो आपसे share किया जाएगा. उसमें बहुत सारे ऐसे questions होंगे जो मैं आपको solve करूंगा. So I think आपकी English भी बहुत improve हो जाएगी. But overall, you will need to practice so that you become good at it. चाहे language हो चाहे कुछ भी हो. All right. For now, I have stopped sharing my screen for now. Maybe we can meet tomorrow. Ravi, Saad sir, or Uzma ma'am, anybody, do you have any questions, any suggestions for me maybe? Not yet, sir. Okay. Folks, I would, Uzma, it's good to read books for learning any language. That is correct. And to be very honest, Uzma, I used to read newspapers and I used to write 5 to 10 words out of it every single day and used to look that up in dictionary. That was like way back, 20 years back. And that has helped me a lot. So I agree to what you're saying, Uzma. So if we focus on communication, language is going to be a part to it. Okay, guys, chat में what I see here is we are not putting some of us are not putting their names. जैसे कि मुझे Samsung लिखा नजर आ रहा है उनका phone का या tap 123 लिखा रहा है. So please try to log in using your name. ठीक है ना, next time so I can address you. I don't want to be disrespectful to anyone. Oh yes, I'm on LinkedIn. Thank you, Islamia. Okay, I think we can part for today. See you guys tomorrow. Have a great day, all of you. Thank you, sir. Thank you so much for the beautiful session. Thank you. Yeah, we will meet tomorrow. Yeah. Sure. Same time, 10 to 11:30. 10 to 11. Yeah, sure. See you around. Bye. Bye, guys. I request everyone to please fill the form which we have sent on the chat box. That's a Google form. Already filled. When can we expect to get this PPT and